Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kaka channel. Dear students, we have discussed the first type of the infinitive in our previous video, and in this lecture we will be discussing the further types of the infinitive and the respective usages. So the next type and second one is the split infinitive. Whenever an adverb comes between two and first form of the verb, which separate two from the first form of the verb, is called split infinitive. मतलब जब टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को दरमियान से सेपरेट किया जाता है और उनके दरमियान एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मतलब एडवर्ब comes in between two and the first form of the verb, it is called as the split infinitive. Like for example, to easily win this match, it is not a piece of cake or is not easy job. To easily, here easily is the adverb, ठीक है, which modifies the verb win, ठीक है. तो and then second sentence says that to fast drive in darkness is dangerous, ठीक है, तारीकी में, ठीक है, या अंधेरे में गाड़ी चलाना खतरे का बायस बनता है, चीज जल्दी या फास्ट चलाना. When it comes to honestly work increases person's honor, ठीक है. ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना इंसान की वकार बढ़ाता है या इंसान का इज्जत बढ़ाता है, ठीक है. अच्छा, अबाउट द स्प्लिट इन्फिनेटिव देयर इज अ डिबेट in between the grammarians. Some of them says that it is the correct way of writing and some of they reject this way of writing. जब वो कहते हैं कि स्प्लिट इन्फिनेटिव नहीं किया जाता बल्कि हम इनको बल्कि ऐसा ही लिखते हैं, to win this match is a piece of cake, yeah, to drive fast is in darkness is dangerous, to work honestly, मतलब ये कहते हैं कि split infinitive is the wrong way of writing, but there is a debate, either you want to write it is the correct or you don't want to write. Then comes the negative infinitive. Always put not before to. जब या फुल इन्फिनेटिव के से पहले नॉट के इस्तेमाल से इट बिकम्स नेगेटिव. लाइक फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर इज अ डिसीजन नॉट टू स्टार्ट. सो बिफोर द फुल इन्फिनेटिव वी हैव यूज्ड नॉट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट इज इन हिज फेवर, ठीक है. डायरेक्टर का जो डिसीजन है, फैसला है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट न करना, उसके फेवर में जाता है, उसके फायदे में जाता है. देयर कम्स द ड्राइव, टू ड्राइव केयरफुली, या ड्राइव carefully sorry, not to behest, जल्दबाजी ना करें रोड पे, ठीक है, आराम से गाड़ी चलाएं ताकि जल्दबाजी ना करें रोड पर. Then comes the bare or plain infinitive. Whenever the first form of the verb comes without ses, ing or to. Full infinitive वो था कि to plus first form of the verb, it becomes full infinitive. Whenever we remove to from the first form of the verb, it becomes bare infinitive. It has many usages. So its first usage is says that after the causative verb make, we use make is a causative verb. So after this causative verb we use the bare infinitive. Like for example, she is making wash her clothes. So it is the causative verb make. Then the next usage comes used after modal auxiliary verbs. So this verb we can also use in any of the modal auxiliary verb: can, could, may, might, shall, should, whatever you want to use. He can pass the exam. So here we have used first form of the verb without s, es or ies form, as well as without to. Then comes the third usage, use after the verb of perception, ठीक है, जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फील, सी, हियर. सुनना, हियर, सी देखना, एंड फील महसूस करना. सो वर्ब ऑफ परसेप्शन को आप वर्ब्स ऑफ सेंसेशन भी कह सकते हैं, सेंसेशन. एंड वी डिस्कस दैट देयर आर 5 verbs of sensation: taste, smell,
ठीक है, then your sense of watching, sense of hearing, and sense of feeling. So sense after these verbs, the verb of perception, we used the bare infinitive. Like for example, I heard him, I heard, मैंने उसे सुना, just speak against them. So and now we have the fourth usage of the bare infinitive or plain infinitive, that it is used after let. So we know let is the causative verb, and we use let where we seek or ask for a permission, or we give someone a permission to do an action. So let plus object, then comes the bare infinitive. Like for example, let him study. Let him, for example, is the let causative verb, then object, then comes bare infinitive. उसे पढ़ने दो. Or let her go home. Let her object, then go, the first form of the verb. उसे जाने दो. Let me study, let me sleep. तो ऐसे सेंटेंस में हम हमेशा bare infinitive का यूज करते हैं. ठीक है. Then comes the fifth usage of bare infinitive, that it is used after had better. चाहिए, यहां पर हम यूज करते हैं हमें चाहिए. लाइक आई, इट इज लेट. ठीक है, अभी लेट है. वी हैड बेटर स्टे हियर. देखिए, हैड बेटर के बाद हमेशा बेर इन्फिनिटिव आएगा. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस, ई एस, आई एस और आई एन जी. ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई भी इन वर्ड्स का इजाफा ना हो, इन लेटर्स का इजाफा ना हो, इसको हम बेर इन्फिनिटिव कहते हैं या प्लेन. अभी लेट है, हमें यहां पर रहना चाहिए. और इट इज कोल्ड. ठीक है, बहुत सर्दी है. वी हैड बेटर टर्न ऑन द हीटर. हमें चाहिए कि हीटर ऑन करें या ऑन रखें. Then comes is sixth and last usage of the bare infinitive. It is called, it is used after the would rather. Would rather and or the had better, they are the structures which we normally use in our writing and speaking. वुड रादर. ठीक है, के बजाय. ठीक है, अब दो एक्शंस हो रहे हैं. एक एक्शन के बजाय आप प्रिफर करते हैं सेकंड एक्शन को. लाइक आई वुड रादर स्टडी देन वॉच मूवी. ठीक है, आई वुड रादर, ठीक है, मुझे पढ़ना चाहिए बजाय कि मैं मूवी देखूं. और ही वुड रादर बाय अ न्यू कार. उसे नई कार लेनी चाहिए बजाय ओल्ड कार के. ठीक है, अब यहां पर दो एक्शंस का कंपैरिजन हुआ जा रहा है. ठीक है, वुड रादर. Then comes is fifth type of the infinitive, is called the passive or present passive infinitive. Present एक्शन इसमें प्रेजेंट का हो रहा होता है, लेकिन हम वर्ब यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का. ये अपने याद रखना है. तो whenever we use to be plus third form of the verb is called passive infinitive. Like for example, a meeting to be convened tomorrow. ठीक है, a meeting to be convened या to be called tomorrow, और a college to be built in the village. तो इस सेंटेंस में हम बेसिकली विल की जगह हम टू बी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, लाइक अ मीटिंग विल बी कन्वेंड, अ कॉलेज विल बी बिल्ड. ठीक है, तो जब भी टू बी आ जाए और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. ठीक है, देन कम्स the progressive infinitive or present progressive infinitive. It's called that whenever we use to be, then first form of the verb plus ing is called the progressive infinitive. Like for example, she is happy to be living in the hostel. She is happy to be living in the hostel. ठीक है, वो हॉस्टल में रहना या खुश है, वो हॉस्टल में रहने से खुश है. और नेक्स्ट एग्जांपल सेज दैट hope to be enjoying, and we normally use this sentence at the end of letters, that hope to be enjoying. So we always use the progressive form because it shows an action in a continuous form. So dear students, our next type of the infinitive, that is the perfect infinitive. So the infinitives that we were talking till now, that were all about the present infinitives, where we used the to plus first form of the verb. So now we will be using
as a perfect infinitive in which it comes to have plus third form of the verb. It's called the perfect infinitive. Like for example, she is happy to have passed the exam. To have plus third form of the verb. ठीक है, she is happy to have passed the exam. Then comes I am sorry to have disturbed you. To have disturbed you. To have, then third form of the verb, then the object. आई एम सॉरी, मैं माजरत करता हूं आपको डिस्टर्ब करने के लिए. टू हैव डिस्टर्ब यू. ठीक है. देन कम्स दे लुक्ड टू हैव वॉन द मैच. दे लुक्ड. और अब देखें, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि भाई शी सीम्ड टू हैव फेल्ड द एग्जाम. अब इन दो सेंटेंसेस में देखें यहां पर जो एक्शन हो रहा है इन फर्स्ट दो सेंटेंसेस में अब यूज हो रहा है परफेक्ट इन्फिनिटिव, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है ऑफ द प्रेजेंट टेंस. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल शी इज हैप्पी टू हैव पास द एग्जाम. वो खुश दिख रही है, ठीक है, कि उसने एग्जाम पास किया है और मैं माजरत करता हूं. ठीक है. सो इट टेल्स यू अबाउट द एक्शन इन द प्रेजेंट एक्शन. और जब हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, सो व्हेन एवर द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेसीड्स परफेक्ट इन्फिनिटिव, इट विल गिव दैट द एक्शन इज डन इन द पास्ट एक्शन. देखें, दे लुक्ड, वो दिख रहे थे, टू हैव वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीता था. ठीक है. एंड शी सीम्ड टू हैव फेल्ड इन एग्जाम. ये वो ऐसा दिख रही थी जैसे उसने एग्जाम में फेल हो गई है. ठीक है. तो दीज बोथ एक्शंस हैव टेकन प्लेस in the past, while the above two sentences which tells you about an action which is done in the present, which is completed but in the present, अभी अभी हुआ है. लेकिन ये एक्शन हुआ है जब हम टू हैव से पहले सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि भाई द एक्शन इज डन इन द पास्ट. Then we have the next type. It says that perfect passive infinitive. So the eighth type is perfect passive infinitive. It is the passive form of the perfect infinitive. Like for example, she was seemed to have been failed in the exam. हम to have और third form of the verb के बीच में been का इजाफा करते हैं, so that becomes the passive form of the. Like for example, she seemed to have failed exam. She seemed to have been failed. ठीक है. They looked to have won the match. They looked to have been won the match. ठीक है. They were. So this example says that they were to have called them, but they didn't call them. ठीक है. They were to have been called them, but they didn't call them. So the next usage and the last type of the infinitive, it is the perfect progressive. It tells you about an action which is going on in the present. He pretends to have been working the whole day. ठीक है. वो ऐसा दिखा रही है, दिखा रहा है. He pretends दिखा रहा है, और she pretends वो दिखा रही है to have been working the whole day. वो ऐसा बहाने बना रही है, या प्रिटेंड मतलब शो ऑफ करना कि भाई वो उसने सारा दिन काम किया है. So it tells you about an action which is going on in a continued way. So here are two sentences. Like I want to sit here, और एक है I would like or love to sit here. अब ये दो सेंटेंसेस बाज लोग बोलते हैं. ठीक है. whenever we are talking or we are writing to elders, ठीक है, especially in a respectful way, so we should not say that I want to sit here, rather we should use that I would like to sit here. ठीक है, मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ. मीनिंग का सेम ही है, बट द सेकंड वन इज मोर पोलाइट देन द फर्स्ट वन. और जब आप कोई टेंस बोलते हैं परफेक्ट में,
So आप ये कह सकते हैं कि I would like to have seated here, or I would like to have gone there, I would like to have studied. So whenever we use the perfect of form, then there comes the third form of the verb. So thank you so much for watching. This was all about the infinitives. See you in the next lecture.